basic question for you. If X income is 20% more than that of Y, what percent of Y income is less than X? Now tell me your answer. Options are 83 1 by 3%, 16 2 by 3%, 83 2 by 3% and 16 1 by 3%. What will be your answer? ये छोटा क्वेश्चन था, आंसर आना चाहिए. If X income is 20% more than that of Y, there is two way to solve this type of question. Here X is greater than Y by how much percent? You can say that 20%. Now we can let the value of Y is 100. Now X is 20% more than this value, so you can say that X is 120. On 16 2 by 3% will be the right answer. 6 and 5. Okay. And ये टर्म आपको डायरेक्ट भी मिल सकता है 20% more. What I told you that in previous class, the more percent represent more upon original. Original means जिससे compare हो रहा है. Here X is greater than Y, so compare X is greater than this value is compared with Y. So denominator is original. Now we can let Y is 5, then X is 6 because X is 1 greater than Y. Now here the question is what percent of income of Y is less than this. 5 is how much less than X? You can say that 1, and 1 is less than by 6. So now on denominator this is 1 by 6 into 100%, and on solving you will get 16 2 by 3%. लास्ट क्लास में हमने पढ़ रखा है कि हाउ मच टू टैकल द मोर परसेंट एंड लेस परसेंट. अभी भी किसी को डाउट है तो बता दो, अदरवाइज हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करें इसके. एनीवन? ओके, एक मिनट. आई थिंक सबको क्लियर होगा. नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 18. Okay, if the income of Ram is 12 1 by 2% more than that of Shyam, the income of if Shyam is less than that of Ram by, so how can we solve? There is a person Ram and Shyam. Who is more than? Ram is more than that of Shyam. Then you have to convert this 12 1 by 2% into fraction. Then this is 1 by 8. Now you can say that Ram is compared with Shyam. So जिससे कंपेयर होता है उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में. सो हियर श्याम इज 8 एट राम इज 1 मोर देन श्याम, so राम वैल्यू इज 9. नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ राम एंड श्याम. The question is Shyam is how much percent less than Ram? Then this 9 is how much less than 8? You can say that 1. And this 9 is how much less than from which value? You can say that from 8. So on denominator, no. I'll read the question now. Shyam is less than Ram, so you can say that 1. And this 8 is how much less than by 9? You can say that 1. So this one is compared with 9. So 1 upon 9 into 100%. And answer will be 11 1 by 9%. This is the answer. Okay, so that's why this option is correct. अभी भी किसी को डाउट है? Less percent, more percent? Okay. Now move to the next question. Now this question number 20. The income of C is 20% more than B's. Here C's income is compared with B, and now B's income is compared with A. Find how much percent C income more than A. एक बार सॉल्व आप करके देखो, 2 मिनट. नहीं आता फिर मैं बता रहा हूँ. ओके, एक बार ट्राई करें. चलो, मैं दो तरीके हैं. पहला बेसिक जो आना चाहिए. Here is C compared with B, and C is how much percent more than 20% more than B. It means compare with C and B. 20%. You can say that this is 1 by 5. C is more than B, so it means compared with B value, so B is 5. And C is 1 greater than 5, so you can say that this is 6:5. Now B is 25% more than A. Now B is compared with A, and 25% means 1 by 4. Now here B is how much more than this is compared with A. So here A is 4 and B is 1 greater than 4, so this is 5. यहाँ तक किसी को डाउट है? Anyone? Now see this. Here B value is 5 and here B value is 5. If B value is both same in the both ratio,
Now we can add all these ratio CBA. C ratio B is 6:5. B ratio A is 5:4. Now we have the combined ratio of CBA, and question is C is how much percent more than A? Means this 6 is how much percent more than 4? Now you can say that 6 is how much more than 4? Then you can say that 2 by what value? 4 into 100%. On solving, 25 twos are 40. Sorry, 25 twos are 50. Now you can say that C is 50% more than A. क्या अभी किसी को डाउट है? Anyone? Yes, no, कुछ भी? नो डाउट सर। ओके अच्छा, अगर मैं एक बेसिक चीज और इसमें चेंज कर देता इस क्वेश्चन में, सपोज कर भाई ये तो तब के लिए था जब बी की वैल्यू दोनों जगह सेम आ गई। अगर सेम नहीं आती, मान लो अगर एक मैं क्वेश्चन लिख दूं C रेशियो B 4:5 एंड B रेशियो A 6:7, सपोज करो। नाउ क्या आप लोग मुझको बता सकते हो C रेशियो B रेशियो A क्या होगा? एक बार बताना जरा, क्या कैसे फाइंड आउट करोगे? मान लो अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तब क्या करेंगे भाई? यहाँ पिछले क्वेश्चन में तो बी की वैल्यू सेम थी दोनों जगह। 4:30:35। कैन यू प्लीज अगेन रिपीट? 24:30:35। वेरी गुड। तो कभी भी अगर अलग अलग रेशियो एंड कॉमन वेरिएबल की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग हो तो उन्हीं को सेम बनाओ। हमें 5 और 6 को सेम बनाना है। ना समझ में आए देन जस्ट मल्टीप्लाई। हियर 6 है तो 6 का यहाँ मल्टीप्लाई, एंड यहाँ 7 5 है तो इधर 5 का मल्टीप्लाई। नाउ इट बिकम 6 4s are 24, B वैल्यू इज 30 एंड A वैल्यू इज 35। ये होता। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे कि C A से कितना कम है या B A से कितना कम है। ओके अब आप लोग एक बार सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 20। अब मेरी बात ध्यान सुनना। There is a first number, second number and third number. These two number are compared with third number. ठीक है, अगर कभी भी ऐसा परसेंटेज हो तो आपको कोई ना कोई नंबर लेट करना पड़ेगा। अगर कभी ऐसी परसेंटेज हो जो आप 100% से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, like here, if anyone say you find 20% of 100, you can easily calculate it. There is a 20. Find 50% of a number 100. Okay, you can say 50. But अगर कोई कहते find the 16 2/3% of a number, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। अगर कभी भी ऐसी परसेंटेज हो जिन्हें आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो तो हमेशा जिससे भी कंपेयर हो नंबर लेट करना 100। तो यहाँ 20 एंड 50% इजीली कैलकुलेट हो सकते हैं। तो किससे कंपेयर हो रहा है? थर्ड नंबर से। तो हियर वी कैन लेट द थर्ड नंबर इज 100। नाउ द क्वेश्चन इज टू नंबर, द फर्स्ट नंबर इज 20% ऑफ अ थर्ड नंबर। 100 का 20% दैट इज 20, 150% दैट इज 50। नाउ वी हैव द फर्स्ट नंबर, second number and third number. Now the question is what percentage is the first number of the second number? This first number is what percent of the second number, not about the less percent, not about the more percent. Directly it is asking this 20 is how much percent of 50. Then you can compare 20 is how much percent of 50. So it can be written as like this. So this is 40%. ओके एनीवन हैज डाउट? ओके अब भाई क्वेश्चन आप लोग बताएं। क्या इसे इरेज कर दूं? जिसका इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखा जाए। टू नंबर्स आर 30% एंड 37% लेस देन थर्ड नंबर। फाइंड सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन फर्स्ट नंबर। ओके ऑप्शंस आर 5%, 10%, 15% एंड 20%। बताओ भाई क्या आएगा आंसर? 10%। 10%। वेरी गुड। बाकी लोग वी कैन लेट फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड। ये इजिली कैलकुलेट होने वाली परसेंटेज है। नाउ वी कैन टेक द थर्ड नंबर इज 100। द फर्स्ट नंबर इज 30% लेस ऑफ थर्ड नंबर। तो 30% ऑफ 100 इज 30। नाउ द फर्स्ट नंबर इज 30 लेस देन द third number, so this is 70 and it will become 63. Okay, now the question is second number is how much percent less than first? So how much less? You can say that 7. Now this 7 is compared with the first number 70 into 100. Now you can say that the answer will be 10. Okay, किसी को डाउट है अभी भी? No. एक बार इससे ट्राई करो, आपसे ये वाला आंसर आ रहा है? कैसे आए इस क्वेश्चन को भी समझ। What percent decrease in salary would exactly cancel out 20% increase? What does it mean? If my salary is 100 right now and it is increased by 20%, then it will become 120.
Okay, now the question is, we have to cancel out this 20% increment. It means we have to come again on 100. Okay, now this 120 reduced to 100. So by how much percent? You can say that if we reduce 20 from 120, then it comes to 100. Then you can say that 20 is reduced from 120 into 100%. So the answer will become 16 2 by 3%. Okay, चल अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन चेंज करूंगा मैं. ये जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन नहीं मैं बता रहा हूं, एक बार आप लोग बताओ मुझे क्या आएगा आंसर फाइनल. मैंने ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराया. So, which one? 27 number. We have already discussed it in the last class. There is a percentage change in the area, and area depends upon the length and breadth. So if you want to calculate the percentage change of area, then you have to calculate original area and new area. And for the original area, you have to original length and original breadth. Sir, आना चाहिए. हमने last class में discuss किया था. Length into breadth is equal to area, original and new. Length is increased by 37, 1 by 2%. That is 3 by 8. Then you can say that original length is 8 and increased by 3. Then it will become 11. Now breadth is decreased by 20%. 20% you can say that 1 by 5, 5 and 4. Now you can say that 8 5s are 40 and 11 4s are 44. Now you can say that the area is increased by 40 to 44. So area is increased by 4 by 40 into 100%. 10%. Yeah, this is 10% increment in the area. ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया. Now can you again tell me the answer for question number 28? ऐसा सेम कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया था. प्राइस, there is a relation between price, consumption and expenditure. आंसर नहीं आया. 20 by 3. 80 by 3, 20 by 3. Yes, 20 by 3 is the right answer. 6 2 by 3. now मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. Price into consumption is equal to expenditure. Price is increased by 16 2 by 3%. So 16 2 by 3 is 1 by 6. So price is 6 to 7. Consumption is decreased by 20%. Now you can say that 5 to 4. So expenditure is 30. Now it comes to 28. So expenditure is decreased by 2 from 30 into 100. Now 0 and 0 will be cancelled out. This is 20 by 3 and it is also written as 6 2 by 3% decrease. Okay. अच्छा चलो एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ ऐसा ही. Okay, आपको बताना है. The price of sugar is increased by 16 2 by 3% and its consumption is decreased by 14 2 by 7%. Find percentage change in the expenditure. Now tell me the answer. सब लोग ट्राई करना और आंसर जरूर बताना. अब इससे अब एक कॉन्सेप्ट सीखोगे आप. वो आप लोग लाइन 16 2 by 3% is 1 by 6 and 14 2 by 7% is 1 by 0%. 0%. Yes, you can say that 0%, or you can say that there is a no change in the expenditure, or you can say that the expenditure is constant. You can say that take up concept. Sorry, price into consumption is equal to expenditure. So आपने ये लिखा होगा 16 2 by 3 6 to 7 into 14 2 by 7 1 by 7. So you decrease 7 to 6, 42 and 42. There is a no change, so you can say that. Now एक चीज सीख, अगर दो वैल्यू के प्रोडक्ट को, the product of two values third term, and we want to keep it constant, the third term. If you want to keep the constant the third term which is product of two terms, so here you can say that यहाँ पे जो वैल्यू है उन्हीं का रेसिप्रोकल यहाँ लिखा हुआ है, मतलब अपोजिट. देखो अगर 6 और 7 है तो यहाँ क्या हो गया 7 and 6. अगर मैं यहाँ पे 4 and 5 लिखता, अगर मुझे प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है तो इट मींस 5 से क्या हो जाता 4 हो जाता, प्रोडक्ट कांस्टेंट आता, कह सकते हैं. सो हियर we can say that if we want to keep the expenditure same, we want to keep the area change, then अगर हमें एक रेशियो पता है, सपोज प्राइस का रेशियो पता है, तो हम कंजम्पशन का रेशियो बता सकते हैं. सिमिलरली L into B is equal to area. और क्वेश्चन कह रहा है एरिया को कांस्टेंट रखना है. अगर रेशियो L का A to B है तो मैं डेफिनेटली सॉरी X और Y लेते थे, X और Y है तो डेफिनेटली बी का रेशियो क्या होगा y is to x होगा हमेशा. अगर दो वैल्यू के प्रोडक्ट को सेम रखना है तो
किसी एक का रेशियो पता है तो दूसरा रेशियो क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट होगा। अब ये क्वेश्चन देखो पूछे कैसे, इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ जो एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 16.2% फाइंड हाउ मच परसेंट इट्स कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। ओके, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा और यू नो दैट द एक्सपेंडिचर इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड कंजम्पशन. Price into consumption is equal to expenditure, and if you want to keep the expenditure same, and if there is a one ratio is given, then you can assume the second ratio of second term. So here 16 to by 3% increase 1 by 6, so you can say that 6 to 7, and we want to keep expenditure same in both case, then we can say that 6 to 7, then consumption is always 7 to 6. Okay, now we have to calculate how much percentage consumption should be reduced, so you can say that 7 to 6. Now 7 to 6 means 1 reduced from where original is 7 into 100%. Now you can say that this is 14 by 7. क्या किसी को डाउट है? It means अगर एक्सपेंडिचर कभी भी कांस्टेंट रहेगा तो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो पलट कर लिख देना, अपोजिटली। क्या अभी भी किसी को डाउट है? No, sir. ओके, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप लोग। द लेंथ ऑफ अ रूम is increased by 20%, find by how much percent its consumption should be, गलत लिख दिया, should be reduced so that area remains same. Now tell me the answer. 16/2/3. वेरी गुड, 16/2/3 इज द राइट। क्या सबका यही आ रहा है भाई? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं L into B is equal to area. Area is 5 to 6 and we want to keep area same. That means we have to write this is 6 to 5. There is a 1 decrement in the breadth from where 6. So this is on solving it will give you 16/2/3%. अभी भी किसी को डाउट है? ओके, अब एक देखो ये क्वेश्चन है, ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा इसको समझ। व्हाट डज मीन ऑफ दिस क्वेश्चन? थोड़ा सा इसको पहले मैं बेसिक से समझाता हूँ तब उसके बाद। सपोज इफ अ पर्सन हैव ₹200, ओके, एंड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹20 पर के। नाउ लिसन, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मच क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल द पर्सन परचेज, कंजम्पशन और क्वांटिटी? 10। वेरी गुड। एंड अगर मैं ऐसे लिखता ₹200 एंड द कंजम्पशन इज 10, व्हाट विल बी द प्राइस? सो फॉर द प्राइस यू हैव टू नो टोटल रुपीज अपॉन टोटल कंजम्पशन, okay, so here 200 is divided by 10, then you can say that ₹20 per kg. okay, यहाँ तक तो क्लियर है। अब अगर इस चीज को मैं और लिखूं, 1 मिनट। now in the next day the person brings the same amount, it means ₹200. okay, now the today price is of that particular item is ₹25 per kg. okay, now the consumption is, now tell me the what will be the consumption? 8. Very good. Now dear, you can see here in the both scenario the expenditure is same. In both scenario the person bring the same amount 200, but you can see this, there is a percentage change in the price. The percentage change in the price, it goes from 20 from 25. So you can say that the ratio of price is 20 to 25. This is original and this is new. This is 4 and 5. And now consumption 10 to 8. When you simplify 10 to 8, it again 5:4. Now again you can see this, if the expenditure is same in both case, if we have the ratio of price, then it is always inversely proportional to consumption. जो यहाँ प्राइस का रेशियो जस्ट उसका इनवर्स कंजम्पशन का रेशियो, कैसे कह सकते हैं? किसी को डाउट है इसमें? चलो अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसमें। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछता कि व्हाट अमाउंट परसेंटेज इंक्रीज है प्राइस में, तो आप कह सकते हो 20 minus 25, 5 का इंक्रीमेंट है फ्रॉम 20 into 100%, देन यू कैन से दैट 25% इंक्रीमेंट इन द प्राइस. सो द क्वेश्चन इज, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, अ पर्सन इनेबल 2 kg मोर नहीं, a person purchase 2 kg less sugar in ₹200
फाइंड ओरिजिनल प्राइस। ओके, एक चीज, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे एक बार पढ़ लो, फिर इसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछता है, थोड़ा सा इसको ध्यान। इसके बाद मैं इसकी एक ट्रिक भी बता दूंगा, उसको भी यूज कर सकते हो अगर इस टाइप का क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज दैट एक पर्सन है जिसके पास 200 रुपए थे, 200 रुपीज थे। हुआ क्या, प्राइस में 25% का इंक्रीमेंट है। वो पहले भी 200 लेके जाता था, बाद में भी 200 लेके जाता है। लेकिन हुआ क्या, प्राइस 25% इंक्रीज होने की वजह से वो कितने केजी शुगर कम खरीद पा रहा है, 2 केजी शुगर कम खरीद पा रहा है। ओके, ये 2 केजी लेस मतलब क्या है, ओरिजिनल कंजम्पशन एंड न्यू कंजम्पशन का डिफरेंस है। क्लियर है यहाँ तक? आपसे प्राइस पूछ रहा है, तो कभी भी बच्चे अगर आपसे प्राइस पूछता है तो प्राइस इज ऑलवेज टोटल रुपीज अपॉन टोटल कंजम्पशन। अगर ओरिजिनल पूछेगा तो कंजम्पशन विल बी ओरिजिनल, एंड अगर न्यू प्राइस पूछेगा तो कंजम्पशन विल बी न्यू। अब देखो यहाँ हमें 200 पता है पहले से ही, हमें बस कंजम्पशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमें पता है 200 दोनों केस में लेके जा रहा है, इट मींस एक्सपेंडिचर सेम है। तो यहाँ लिख लेते हैं ओरिजिनल एंड यहाँ लिख लेते हैं न्यू। नाउ द प्राइस इज 25% इंक्रीज 1/4, so you can say that the price 4:5, and we know that the expenditure is same, so price का अगर रेशियो 4:5 है तो कंजम्पशन 4:4, 5:4। क्लियर है यहाँ? और रेशियो में लिखे गए डेटा एज्यूम्ड होते हैं। हमने एज्यूम किया पहले वो 5 यूनिट खरीदता था, नाउ अब वो खरीदता है 4 यूनिट। हमारे हिसाब से कितने यूनिट कम खरीद पा रहा है, 1 यूनिट। एक्चुअल में कितने यूनिट, कितना केजी कम खरीदा है, 2 केजी। नाउ यू कैन से दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 केजी। देन हमें टोटल कंजम्पशन बताना ओरिजिनल वाला, दैट इज 5 यूनिट। देन 5 यूनिट इज इक्वल टू 5 2 10 केजी। इट मीन्स ओरिजिनली वो 10 केजी आर्टिकल खरीद के लाता। तो हियर divided by 10, this will be cancel out and answer will be 20 rupees per kg। क्या इसमें अभी किसी को डाउट है? हमेशा क्वेश्चन ये कहे 2 kg मोर 5 kg लेस, तो हमेशा वो कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस होगा। प्राइस का रेशियो पता होगा तो कंजम्पशन अपने आप हमारे हिसाब से डिफरेंस निकाल लेना, रेशियो का डिफरेंस। देन उस रेशियो के डिफरेंस को जितना केजी लेस या मोर कह रहा उससे इक्वेट कर देना, देन यू विल गेट द यूनिट 1 यूनिट वैल्यू और जो आपसे पूछ रहा हो उस यूनिट का मल्टी। किसी को डाउट है इसमें? एनीवन? अब इसकी एक मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है। एंड द ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चन इज, आप लोग हैं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. सो द ट्रिक फॉर इस टाइप का क्वेश्चन है तो अब दो ही चीज पूछेगा, ओरिजिनल प्राइस। ओपी मीन्स ओरिजिनल प्राइस, ए अपॉन एन इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स, वेयर ए इज रुपीज, एन इज क्वांटिटी एंड एक्स इज परसेंटेज। ओके, अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रही होगी देन एड इट, अगर डिक्रीज हो रही होगी माइनस। सपोज इस क्वेश्चन को करते हैं ओरिजिनल प्राइस। हियर ए इज 200, एन इज हाउ मच क्वांटिटी लेस और मोर, 2 into x is percentage, this is 25, and increase, so you have to add 100 plus 20. Okay, 200 upon 2 into 25 upon 125 on solving 5, and this is 40 divided by 2 is 20. So this is the trick for this original price. Okay, and for the new price, इसे भी नोट कर ले। देखो कॉन्सेप्चुअली अगर आप सॉल्व करोगे तो जो पहले तरीका बताया, अगर आप ट्रिक याद रख सकते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसकी ट्रिक भी आते हो। एंड द न्यू प्राइस इज एनपी, दैट इज ए अपॉन एन इनटू एक्स अपॉन 100। ओके, क्लियर? एक बार नोट कर लो, देन जस्ट इन्फॉर्म मी। ओके, इसे नोट कर लें जरूर। ओके, अब ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन मैं वो दिखा रहा हूँ, उसे आपको सॉल्व करना है। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 37। अब एक चीज का ध्यान रखना, आंसर पर केजी में है एंड यहाँ क्वांटिटी किस में है, ग्राम में, तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू केजी। सो दिस इज 0.5 केजी। ओके, जस्ट ट्राई द क्वेश्चन नंबर 37, आस्किंग द ओरिजिनल प्राइस। कैसे कर रहे हो आप लोग, ट्रिक से या कॉन्सेप्ट? Concept. मैं दोनों से एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। So it is 2. 2, no, 18. The answer is highlighted here. This. Okay, next then. Okay. पहले concept से. So here the person bring 36 rupees. So we have 36. And asking the original price. Then we have to know the original consumption. So here original and new. There is a change in price. 20% reduce. It means 1/5. If the price is 5, now it become 4. Okay. Now the consumption is 4:5.
5. Now according to us, the person enabled to increase his consumption by 1 unit, and according to question, this is 500. Now we have say that 1 unit is equal to 0.5 kg. Okay, now we have to calculate the original consumption, so that is 4 units. So 4 unit is equal to 0.5 into 4, that is 2 kg. It means a person initially purchased 2 kg article in how many rupees? 36. So price is rupees upon consumption, that is 2. So the answer is 18 rupees per kg. अभी कॉन्सेप्ट में अभी भी कहीं दिक्कत है? किसी को भी कोई स्टेप ना समझ में आया हो कॉन्सेप्ट में? ओके, अब लाओ ट्रिक पे कर लेते हैं. So trick for original price, that is A by N into X upon 100 plus minus X, where A is rupees, so that is 36. N is the quantity which is less or more, so this is 0.5. X is 20 upon 120. Okay, now 36 into 2, 12 5s are 60, so this is 6 because there is a decimal. 6 6s are no, कुछ गलत कर रहे हैं हम. समथिंग इज रॉन्ग. एक मिनट, कुछ गलत लिख दिया क्या? कैलकुलेशन यहाँ साफ साफ 36.5 into 20. ओह, रिड्यूस मीन्स 80. मैंने यहाँ गलती क्या की? मैंने प्लस किया. मैंने क्या बोला? अगर इंक्रीज हो रहा तो प्लस करना, रिड्यूस हो रहा है तो माइनस कर देना. ये गलत. नाउ हियर ये 4 टाइम 5 4s are 20, so point decimal, so here 36 by 2 and answer is 80. ओके, किसी को अभी भी डाउट है इसमें? ओके, अब एक बार जल्दी से आंसर क्वेश्चन नंबर 36 एक बार फिर से आप लोग सॉल्व कर लो, बस फिर इस वाले कॉन्सेप्ट को क्लोज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 36 थोड़ा कैलकुलेटिव है तो ध्यान रखो. रिड्यूस प्राइस मींस दिस टाइम ही इज आस्किंग अबाउट द न्यू प्राइस. रिड्यूस प्राइस मींस न्यू प्राइस, so you have to first calculate the new consumption. So 13.5. Yes, 13.5 is the right answer. क्या सबका आ गया 13.5? किसी को भी डाउट है अभी भी इस वाले क्वेश्चन में? एनीवन? ओके, मैं ज़ूम करके चल रहा हूँ, सबको क्लियर है. ठीक है, सो अब जो हमें आगे पढ़ना है. यस So can you solve by logic method, sir, not by formula? ओके, लॉजिकल सॉल्व कर लेते हैं इसको. चलो, so here the price decrement is 10%, original and new. Okay, price is 10 to 9, so consumption is 9 to 10. Okay, all these value are in ratio, so we can say that we assume if original consumption is 9, then new consumption is 10. So how much more? You can say that 1 unit. Now according to question, how much more? 6.2 kg. So 1 unit is equal to 6.2 kg. Now asking about the reduced price means new price. Asking about new price. So for the new price, total rupees upon total consumption, but in the new. So your new consumption is 10 unit, then 1 unit is 6.2. Then you can say that 10 unit is 62 kg. It means एक person है जो 837 रुपीज लेके जाता है और उसमें 62 kg आर्टिकल परचेज करके लाता है, तो उसका प्राइस क्या रहा होगा? 837 डिवाइडेड बाई 62. जब आप इसको डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 13.5 रुपीज पर. ओके, क्लियर? सो अब जो हमें आगे पढ़ना है दैट इज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर ये क्लियर है तो आपका प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट चैप्टर काफी क्लोजली से रहता है, काफी क्लोज रहता है, तो आसानी से आप समझ सकते हो. ओके, लेकिन ये जो हम लोग करेंगे वो करेंगे कल.